तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो थीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर। इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 एंड द 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. Release date April 13, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. Release date April 13, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan
Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million,
बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany,
के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डेलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर एंड सैमुअल एल जैक्सन. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K. Bismlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K. Bismlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget
444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron
टाइलर जॉनसन, एलिजाबेथ ओल्सन, पॉल बेटनी, केट बिशमलेंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस एल्बा, लिंडा कार्डिलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर एंड सैमुअल एल जैक्सन. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig. Music by Brian Tyler, Danny Elfman. Production company Marvel Studios. Distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. Release date April 30, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015. United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो थीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 एंड द 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishmolander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig. Music by Brian Tyler, Danny Elfman. Production company Marvel Studios. Distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. Release date April 30, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015. United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो थीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishmolander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig. Music by Brian Tyler, Danny Elfman. Production company Marvel Studios. Distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. Release date April 30, 2015.
Dolby Theatre, May 1, 2050, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget 444 to 495.2 million dollar. बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2050, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget 444 to 495.2 million dollar. बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2050, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget 444 to 495.2 million dollar. बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark
Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bismolander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bismolander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015. Dolby Theatre, May 1, 2015, United States. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $444 to $495.2 million. बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर. इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bismolander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig,
Music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million dollar, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction। इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million dollar, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction। इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million dollar, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel
Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon,
produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K.B. Sumlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K.B. Sumlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो
Team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner
Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो थीम द अवेंजर्स, प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल स्टूडियो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर। इट इज ए सीक्वल टू द एवेंजर्स 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 13, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स
एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो टीम द Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson.
In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K.B. Sumlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, K.B. Sumlander, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million,
बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ पर देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany,
के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डेलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डेलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो theme The Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe (MCU), written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डेलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige. Cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studios, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget
444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction। इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kate Bishop, Anthony Mackie, Haley Atwell, Idris Elba, Linda Cardellini, Stellan Skarsgård, James Spader, and Samuel L. Jackson. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner. Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction। इस मूवी को संदर्भ देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय जॉस वेडन, रिटन बाय जॉस वेडन, प्रोड्यूस्ड बाय केविन फेज, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget 444 to 495.2 million डॉलर, बॉक्स ऑफिस 1.405 बिलियन डॉलर। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ये 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film featured an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron
टाइलर जॉनसन, एलिजाबेथ ओल्सन, पॉल बेटनी, के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डिलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर एंड सैमुअल एल जैक्सन. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का रिव्यू करेंगे. अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन इज ए 2015 अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन द मार्वल कॉमिक सुपर हीरो team The Avengers, produced by Marvel Studio and distributed by Walt Disney Studio Motion Picture. It is a sequel to The Avengers 2012 and the 11th film in the Marvel Cinematic Universe MCU, written and directed by Joss Whedon. The film features an ensemble cast including Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Aaron Tyler Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, के बिस्मलंडर, एंथनी मैकी, हेले एटवेल, इड्रिस इल्बा, लिंडा कार्डिलिनी, स्टीलन स्कार्सगार्ड, जेम्स स्पाइडर एंड सैमुअल एल जैक्सन. In the film, the Avengers fight Ultron, Spider, and artificial intelligence created by Tony Stark, Downey, and Bruce Banner Ruffalo, who plan to bring about world peace by causing human extinction. इस मूवी को संदर्भ देखते हैं. This movie directed by Joss Whedon, written by Joss Whedon, produced by Kevin Feige, cinematography Ben Davis, edited by Jeffrey Ford, Lisa Lessig, music by Brian Tyler, Danny Elfman, production company Marvel Studio, distributed by Walt Disney Studio Motion Picture, release date April 30, 2015, Dolby Theatre, May 1, 2015, United States, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $444 to $495.2 million, बॉक्स ऑफिस $1.405 बिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यही समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.